क्या वाकई जेई की प्रिपरेशन बहुत टफ है? Will my JEE preparation affect my school and board exam results? Will I be able to handle the demanding and rigorous schedule that preparing for JEE requires? सही कोचिंग एंड गाइडेंस का आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने की जर्नी में क्या योगदान है? To get answers to all these questions, watch this video till the end. The thought of preparing for JEE is really stressful at times, and providing the best support is of utmost importance for parents. Hello everyone, welcome to JEE counseling session. I am Neha Gulati. In conversation with me is Mohit Sir. Mohit Sir is an expert faculty at Aakash who has been guiding and mentoring students for last 8 years. He is an alumni of the prestigious IIT Bombay. And today we are going to talk about how the right preparation can help you fulfill your dream of getting into a reputed government engineering college. Welcome, sir. Thank you, ma'am, for having me in this session. Now that class 10 board exams are over, there's one question on every student and parent's mind, that is JEE the only option for all the students opting for non-medical science stream? The answer is clearly no. The main thing is the preparation that is done in these 2 years. For example, कोई भी बच्चा है अगर वो 2 साल एक rigorous तैयारी कर रहा है for JEE, then he has that caliber और वो इतना prepared हो जाता है that he can go for any exam that requires science or maths. For example, NDA, that is Defense Services. Yes. And even if you are selected for, let's say, IIT and NIT, then your options are not that limited. For example, ऐसा ही नहीं है कि अगर मैंने मैकेनिकल से बीटेक की है तो मैं सिर्फ अपने कोर में जा रहा हूँ. मैकेनिकल स्टूडेंट्स आर आल्सो गोइंग फॉर कोडिंग, they are going for consultancy, and even now you can see that maximum students who are selected for IIM or let's say for IES, they are also IITs. The reason being that they get confidence कि मैंने उस टाइम पे किया था, I have participated in the toughest exam, तो अगर मैंने तब किया है तो मैं अब भी कर सकता हूँ. Yes. So like every year, 10 to 12 lakh students appear for JEE, and there are approximately 40,000 seats in all the government colleges put together. So does this mean that it is a very difficult exam and requires support and guidance? Ma'am, the answer to this is yes as well as no. How's that possible? I'll explain it to you. For example, this is a 2-year journey. Yes. So if a student is preparing for each day, if he is targeted, if he is oriented to his goal कि no, I have to do it, I am determined, I am preparing for like 4 to 5 hours. Generally people say कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, आपको 12 घंटे पढ़ना है. ऐसा नहीं है. अगर आप टारगेटेड हैं, आप 4-5 घंटे लेकिन डेली पढ़ रहे हैं, if you are that much motivated, the journey is easy. But अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं, आपको ये नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या है, किस तरह पढ़ना है, because it is like कि let's say I am a chemistry faculty. ऐसे कि केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल हर पार्ट की इतनी मोटी मोटी बुक्स मिल जाएंगी. एंड इवन दैट पर्टिकुलर बुक विल नॉट कवर ऑल द क्वेश्चंस दैट विल कम इन एग्जाम. ऐसा भी होगा. तो आपको वो गाइडेंस चाहिए कि मैं 2 साल में क्या पढूं, किस तरह पढूं एंड हाउ टू प्रोसीड फर्दर. तो इफ यू हैव दैट, यस इट इज इजी. बट इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, यस दिस एग्जाम इज रियली अ टफ एग्जाम. Sir, if I may ask, then what sort of strategy does Aakash follow? Ma'am, to summarize the 35-year plus legacy in a single session is really difficult. But if I briefly concise it, I'll say that वो जो पूरी एक भावना है जो हम 35 years से लेके चल रहे हैं, that is put in a single acronym that is called Akash Advantage. Now, each letter of this acronym will have its journey, will have the theme की what we do here. So I'll try कि मैं इस सेशन में इस पूरे एक्रोनिम को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं so that you can get the idea that what strategy does Akash do. Akash Advantage. Yes, sounds interesting. Why not, sir? Please. So we'll start with the letter A, that is Advanced Technology Driven Teaching. So does this mean that here at Aakash we use all the latest technology in our learning and teaching methods? Yes ma'am, definitely. We use the modern technology, but यहाँ पर पेरेंट्स को और बच्चों को ये जानने की जरूरत है that when I'm saying advanced technology driven, that does not mean that the traditional method of teaching जो हमारा एक होता था कि बोर्ड है, चौक है, that we are not using it. We are using that method कि बच्चे घर से निकल रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, क्लास में बैठ रहे हैं, and teachers are teaching them. ये हो रहा है, but now we have replaced those boards with the smart boards. We have replaced those classes with the hybrid classes. तो
what we are using here is कि let's say बच्चे आए हैं, they are studying in class, teacher is standing here and he is teaching them, but at the same time, for example, if for any reason you are not able to attend the classes, आप नहीं आ पाए, आप out of station हो, whatever be the reason, then you have the possibility कि आप live lecture देख सके, वो भी आपके batch का from your own teacher. These classes are designed in a way कि teacher can show you the exact live class at the same time. But at the very same time, if the student is unavailable, like he cannot even log in, he cannot even take online class, then what? And Akash has taken care of that also. Alright. For example, we have our Akash lab. Now, in that, what we have is, we have the recorded lectures. For example, whatever lecture planner you have, we have recorded lectures of each and every lecture. So you can log into your account, you can watch these lectures, and आप अपनी class में आएंगे, and you can start from where your class ends. Okay, with this I have another question. In recorded lectures, it's like passive teaching. What about if a student come across with a doubt? As a part of a great institute, it is our responsibility कि हम बच्चों के doubt की take care करें. We have teachers who have like 20, 30, 40 years experience. So on the basis of that experience, what we have done is कि हमें पता है कि in a particular chapter, what are those questions जिनमें बच्चों को generally doubts आते हैं. Now we have provided the QR codes in the study material. For example, if you are having doubt in that particular question, you will see that there is a QR code on the right side of this question. Now when you scan it through your mobile, you are able to watch the detailed solution of that particular question. Now again, the thing is, what if that QR code is not available with that particular question? Possibility. And also there are questions जो कि हो सकता है हमारे मटेरियल के ही ना हो, because बच्चे तो रेफरेंस बुक्स भी करते हैं. Now in that particular case, what you can do is, there is one option called Ask Your Doubt. If you log into your My Akash app, you will find Ask Your Doubt. Now what you have to do is, it is basically a smart AI driven technology. If you take a picture of your question, you post it there, you will find that on the basis of the AI, you will find the solution here. And now, rarest to rare case, because almost 99.9% questions, solutions are available there. But let's say 0.1%, because I am taking all the possibilities. Yes. Let's say that solution is also not available there. In that particular case, within 2 working days, we will share the solution with you if you post your question there. Okay, so Akash has not left any stone unturned. Okay, how they can ask the question? Do they have to type the question? No, that is the beauty of this part. कि you don't have to type. अब मैं किसी बच्चे से नहीं कहूँगा, for example, if you see any advanced question, it is of 1 page length. Now, अगर बच्चा वो 1 page का question लिखने जाएगा, it will take time. So what you have to do is, you just have to take a picture and you have to upload it. You don't have to write the question, you just have to post it there. So this My Akash app is actually a boon to the students. बिल्कुल. Okay, sir. Now let's move on to our second alphabet, that is D. What does D stand for in Akash Advantage? So here, ma'am, D stands for Dynamic Academic Edge. Okay, what does that mean? So see, in Dynamic Academic Edge, basically, a student is getting edge in his academic journey. एक बच्चे को कहीं ना कहीं it needs a support till the very end. कि जब तक बच्चा एडवांस के लिए एग्जाम देने वाला है, he need the support from the institute, and that Akash provides. And in addition to that, we provide the customized plan for each and every kid. Now, how that customized plan I am talking about? ऐसा नहीं है कि in your 2-year journey you will get a customized plan. Once your syllabus is complete, we have planned for JEE Main, which is called a JEE Score program. It is specifically designed for the JEE Main preparation, जो बच्चे target करते हैं to get in NITs or government colleges. But for example, there is a kid जो अपनी जर्नी को 2 साल तक बहुत प्रॉपर लेके जाए. Now he wants कि नहीं, मुझे तो एडवांस में टॉप 1000 में रैंक चाहिए, मैं तो टॉप 100 में रैंक लाना चाहता हूँ. We have a program called Spotlight program. Now such kids will get a rigorous 4 to 5 month preparation or the revision planner to excel in their advanced preparation. So this way we provide customized student oriented plans for their preparation. Okay, this is something new I have heard. Like Akash is preparing need-based curriculum. Bilkul. So is there anything else that comes under this dynamic academic age? Yes, ma'am, definitely. There are a lot of things, there are a lot of programs, but specifically I want to target the JEE Challenger. See, we have in My Akash app, there is a thing called JEE Challenger. Now, in this JEE Challenger, what we have done is कि
सबसे ज्यादा आपको अगर कोई चीज आइडिया देती है व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इज द पी बाई कि जब आप देखते हो कि पिछले सालों में क्या आया था, मैंने एक चैप्टर किया, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने इस चैप्टर में कितना एक्सेल किया, मैंने इस चैप्टर को कितना अच्छे से समझा। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि लास्ट ईयर जेईई मेन ने उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे, जेईई एडवांस ने उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे, एंड सबसे जरूरी अगर सिमिलर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते, जो क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड कुछ अगर सिमिलर क्वेश्चन होते तो आई विल गेट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं उसे सही करता। एंड टू केटर ऑल दीज नीड्स we have put question in this challenger. Now what you can do is when you log in into this JEE challenger, you will find around 13,000 questions that contains JEE main from 2019 as well as JEE advanced question. Now ये question आपको कहीं ना कहीं they will give you the idea, they will give you the confidence that how your preparation is going. It's a huge question bank. Yes. With this, it's time to move on to our next letter, V. VPMV stands for Vigorous Testing System. Okay, let me guess. Does this mean that here at Akash we conduct too many tests? And with this, एक चीज मुझे और याद आई कि I've often seen students struggling with their mock test. मैम आपने बहुत सही पॉइंट यहाँ पर पुट किया कि क्या हम बहुत ज्यादा टेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है। We understand the need of the kid here कि हम समझते हैं बच्चा 10 देकर आया है, उसे इस पैटर्न का, इस सिस्टम का कोई भी आइडिया नहीं है, किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो वी कीप दैट थिंग इन माइंड कि 11th क्लास में वी कीप थिंग्स सिंपल एंड लेस, ताकि धीरे धीरे वी क्रिएट द कॉन्फिडेंस जो उन्हें उस स्टेज पर चाहिए। एंड एट द वेरी एंड जहां पे रिविजन चलता है, व्हेन दे नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ टेस्ट, क्योंकि दे हैव टू बिल्ड देयर टेम्परामेंट, क्योंकि वहां पर आपको दौड़ना भी है, आपको रेस भी लगानी है, आपको जीतना भी है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, the number of tests will increase and also the difficulty level will increase, and you will find it in our final test series and archive test series. And you make sure that they perform well too. Sure, ma'am. After every test, we do the error analysis. We see हमारा बच्चा कहाँ struggle कर रहा है and in which part we have to work on. Moving on to the next letter, A. So this is academic excellence. Okay, what does that mean? Academic excellence की जब हम बात करते हैं तो first thing that comes to our mind is कि हमारे बच्चों को कौन पढ़ाने वाला है। तो yes, Akash has taken care of that you will find the quality and trained faculties here. The second thing is कि एक क्वेश्चन आपने पहले पुट किया था when you were starting this session कि how I am going to manage my school and board exams. Yes. तो वो भी हमने यहाँ पर ध्यान रखा है। फॉर एग्जाम्पल जब आप आकाश में आते हो, यू विल फाइंड दैट वी हैव अ प्रॉपर लेक्चर प्लान कि हम पहले ये चैप्टर कराने वाले हैं, फॉलोड बाय दिस एंड फॉलोड बाय दिस, बट वी हैव फाउंड आउट कि अ पर्टिकुलर स्कूल इज डूइंग a different chapter, कोई और स्कूल आपका कोई और चैप्टर करा रहा होगा। So for that we have provided the particular sheets which are based on the school exams. Now what these sheets have? They have all the questions which are required, for example single correct, a short answer type question, wrong answer type question, and with detailed solution. Okay, now it's time to move on to the next letter, N. So here ma'am, N stands for Network of Safety, Security and Hygiene. Yes, I really want to know how does Akash ensure safety and security of the students? अगर आप अपने बच्चे को एक इंस्टीट्यूट में भेज रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट नो कि वहां पर मेरे बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या। तो यस, इन आकाश यू विल फाइंड दैट एट द एंट्री गेट ऑफ एवरी इंस्टीट्यूट, आप किसी भी ब्रांच पर चले जाइए ऑल ओवर इंडिया, यू विल फाइंड अ सिक्योरिटी गार्ड जो कि आपका आना जाना अगर आप जाते हो दे विल रजिस्टर इट देयर। सेकेंड थिंग इज, फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा तो इंस्टीट्यूट के लिए निकला है, वो ट्रैफिक में फंस सकता है, उसे टाइम लग सकता है, एंड मैं जानना चाहता हूं कि जब मेरा बच्चा यहाँ से निकला तो वो कितने बजे इंस्टीट्यूट पहुंचा। तो वी हैव द अटेंडेंस अलर्ट कि वंस योर चाइल्ड रीचेस द इंस्टीट्यूट ही विल मार्क हिज अटेंडेंस एंड यू गॉट टू नो एट योर होम कि ओके मेरा बच्चा इंस्टीट्यूट में एंटर कर चुका है। एंड वंस ही इज आउट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एट दैट टाइम आल्सो यू विल गॉट टू नो कि ओके दिस इज 5 PM, मेरा बच्चा यहाँ से निकल चुका है, नाउ माई होम इज 15 मिनट्स अवे, तो मेरा बच्चा 15 मिनट या 20 मिनट तक आ जाना चाहिए। तो इस तरह आप अपने बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इन एवरी रूम, इन एवरी कॉरिडोर वी हैव द CCTV. So this seems like completely secured place for all our children. बिल्कुल मैम, that is our first priority I can say. Okay sir, now the alphabet T. So here ma'am, T stands for target oriented study material. What targets are we talking about here? So here
एज एन एस्पिरेंट अगर मैं जेई के लिए जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में 3 टारगेट होंगे बेसिकली. सबसे पहले मैं सोचूंगा व्हाट अबाउट माय जेई मेन, देन व्हाट अबाउट माय जेई एडवांस, बट व्हाट अबाउट माय बोर्ड्स आल्सो, क्योंकि बच्चे के दिमाग में तीनों चीजें, मुझे तो तीनों पैरेलल लेके आई थिंक दैट्स द फर्स्ट टारगेट द स्टूडेंट्स आर हैविंग. नहीं बिल्कुल, कि बच्चा सबसे पहले यही सोचना चाहेगा मेरे स्कूल बोर्ड्स का क्या, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू अचीव दैट 75% व्हिच इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन जेई. Yes. So we have kept this thing in mind and we have built our modules or the targets. Basically, we call our modules as target because they will help you to achieve your goal. So for example, let's say you are studying a particular chapter. Once your chapter is complete in your module, you will find there are particular steps. For example, there are 3 stages: step 1, step 2 and step 3, like the stairs. First, we'll target the boards. You will find that the questions were easy, the questions were subjective, the long answer type, whatever board will ask. So first we have targeted that. Once you complete all those questions, the next thing is the JEE main questions. Then in step 2, you will find the JEE main based questions which are single correct as well as the numerical based question. And once you have excelled or you have completed all those questions, now the last stage is step 3, and that is questions based on JEE Advanced. So now the chapter is same, only the level of question is increasing as well as the type and the quality which is required for that particular exam is changing. Okay, so you need not to worry about your school boards first of all. Plus you are preparing for your JEE main and eventually for JEE Advanced. Okay, sir. So we've been talking about the preparation all throughout this session. What about if a student want to share his feelings about this journey, or if there are some problems he want to share या फिर feedback ही देना है? Is there any platform Akash provide? I think I'll share my feedback with you with our next letter, that is A. Okay, and that is? That is action oriented student feedback. Now, as the name suggests, here we are talking about the feedback. तो यहाँ पर we are like determined कि जहाँ पर हमें जानना होता है कि how our students are feeling, how our parents are feeling, जो हमसे associated हैं वो हमसे कितना satisfied हैं. So for that, at every interval, like every month, we collect the student feedback. We want to know कि जिनसे वो for example पढ़ रहे हैं, what is their feedback about it. हो सकता है for example I am teaching chemistry in a class, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है उस बैच के लिए द पेस आई एम टीचिंग इज अ बिट हाई, कि मैं थोड़ा ज़्यादा पेस से जा रहा हूँ एंड स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग, और वो कहीं ना कहीं शायद रिस्पेक्ट में, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, या फिर कई बार होता है बच्चा शाई भी हो सकता है, दैट फॉर एनी रीजन ही इज नॉट शेयरिंग इट विद मी फेस टू फेस. नाउ ही कैन सबमिट दैट पर्टिकुलर इशू इन द फीडबैक, एंड फ्रॉम दैट फीडबैक आई गॉट टू नो कि ओके, मेरे हिसाब से बैच में सब सही जा रहा था, बट दिस इज द प्रॉब्लम माई स्टूडेंट्स आर फेसिंग. नाउ आई विल कीप दैट थिंग इन माइंड and I'll work on it. So similarly, we collect the feedback, we share it with faculties, and faculties will not get to know that which student has shared this that feedback. Is important, because that anonymity yes. should be ensured, or the confidentiality should be maintained. And at the very same time, if parents want to talk, बहुत ज़रूरी है मैम. अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे जाके पेरेंट्स से भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, एंड पेरेंट्स को भी ये जानने का हक भी है, एंड दे हैव दोज क्वेरीज कि मेरा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, इन विच सब्जेक्ट ही इज़ लैकिंग. हो सकता है उनके पास उतना टाइम ना हो, दैट ऑन डेली बेसिस दे कलेक्ट द इश्यूज और दे कलेक्ट द फीडबैक. तो इन दैट पर्टिकुलर केस we conduct the PTM just like the PTMs. Okay. Like in schools. बिल्कुल. तो in schools जैसे कि आप PTM अटेंड करते हैं, similarly we have PTMs here, जहाँ पर पेरेंट आते हैं, हर इंडिविजुअल टीचर से बात करते हैं अपने बच्चे के बारे में, that how his performance is going, what he feels like. कि हो सकता है कि बच्चे को किसी टीचर का बहुत अच्छा समझ आ रहा हो, किसी के साथ उसे कुछ दिक्कत हो, तो that parent can share with the teacher. So students as well as parents feedback is well taken care of. बिल्कुल मैम. सर, जैसे कि हमने सेशन के स्टार्टिंग में भी बात की थी कि at times JEE preparation can be stressful. Like that stress can be post exam stress or during the journey exam stress. So how do we take care of students' mental health? Ma'am, again I'll say that the answer of this lies in the next letter, that is genuine care and attention. So stress can be of any type, but the thing is that how we are dealing with it, and for that we have professionals with us,
And we conduct sessions with the students because at times they need the motivation. At times they need that consulting. Okay, it is not that bad if you are getting low scores in a particular exam. But you have that motivation. Okay, the exam is after 2 years and I have to go for it. And for that, such webinars or such sessions are required. And not only we conduct these sessions with the professionals. बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चे को ये मोटिवेशन अपने टीचर से सुनने को मिले, किसी ऐसे पर्सनैलिटी से सुनने को मिले जिससे वो मोटिवेटेड है. फॉर एग्जाम्पल एनी टॉपर. मैं बरेली शहर में रहता हूँ लेट्स से, एंड बरेली से लास्ट ईयर एक बच्चे की बहुत अच्छी रैंक आई थी. तो कहीं ना कहीं मैं उस बच्चे से कनेक्ट कर पाऊंगा, मैं उस बच्चे से रिलेट कर पाऊंगा जब वो मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताएगा. एंड येस, वी प्रोवाइड सच सेशंस, वी कंडक्ट दीज सेशंस सो दैट यू विल फील कि वो बच्चा यहाँ से उठ के जेई तक का रास्ता पूरा किया है, तो यस मैं भी वो रास्ता पूरा कर सकता हूँ. एंड इवेंचुअली आई थिंक दे गेट टू नो कि ये जर्नी सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है. बिल्कुल. अगर किसी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स ना हो तो दैट इज नॉट अ जर्नी, दैट इज अ मोनोटोनस पाथ जो कि आप भी लाइक नहीं करेंगे. Okay, so with this we have come towards our last letter of Akash Advantage, that is letter E. Sir, what does E stand for? So ma'am, here E stands for excellent results. Okay, that's what Akash is known for. And bilkul, I am excited to say कि we have provided the excellent results in the last many years. We have given 6 students in top 50 in last year, and there are so many results. You can see here that we have created the legacy. Yes, we all know that. So with this, sir, I would like you to give us all and all the Akashans and non-Akashans, in fact to all the JEE aspirants, a parting advice. Thank you ma'am. I think you have asked for a parting advice. तो हर JEE aspirant से जो आज ये सेशन देख रहा है, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि yes, this journey is tough, this journey is challenging. आपको रास्ते में ऐसी टाइम आएंगे जब आपको लगेगा अब नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है. बट द मेन थिंग इज इफ़ यू आर डिटरमाइंड, अगर 2 साल तक आप मेहनत करते रहे, कंसिस्टेंटली करते रहे, तो बिलीव इट कि आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ से आपने वो जर्नी का रास्ता सोचा था, जो आपने कॉलेज सोचा था, जो आपने वो स्ट्रीम सोची थी, आप उस तक पहुँचोगे. इट्स ऑल अबाउट द डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. एंड जब आप वहाँ पहुँचोगे ना, आई कैन रिमेंबर माई डेज कि बहुत मेहनत की, दिन रात आप सोचते हो, दिन रात आप मेहनत करते हो, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, कौन सा क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूँ, कौन सा गलत कर रहा हूँ. बट व्हेन यू रीच देयर, आई कैन स्टिल रिमेंबर कि जब वो IIT बॉम्बे के बाहर जब मैं खड़ा था एंड जब मैंने अपना पैर उस इंस्टीट्यूट के अंदर रखा, दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको रियलाइज़ होगा येस इट वॉज वर्थ इट. कि आपको वो 2 साल की जो भी हार्डशिप थी वो आपको नहीं ध्यान रहेगी, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रहेगी, येस दैट स्ट्रगल वॉज वर्थ इट, एंड आई विल आस्क यू टू गो फॉर दैट. थैंक यू. It's definitely going to be worth it. With this, we wish all the aspirants a very best of luck. Good luck.